और शरीर को जिस अवस्था में रखना है उस अवस्था में रख लें। लेट के रखना है शवासन में, पद्मासन में, जिस आसन में रखना है उस आसन में शरीर को रख लें। देखो, एक तो शरीर है, एक है हमारा मन, और एक है बुद्धि। तो ये शरीर को दिशा देना, नियंत्रण देना उतना मुश्किल नहीं है। मामला सारा गड़बड़ होता है मन और बुद्धि के स्तर पे। पिछली बार हमने बातचीत की थी, मन तो भागता है हमेशा। मन भागता है आसक्ति में, तो आसक्ति में भागेगा, फिर उसको दुख होगा, फिर वहां से हटेगा तो सुख होगा, और ये दुख सुख के चक्कर में हम पड़े रहते। तो इस आसक्ति, दुख और सुख और जो भ्रम है, इसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। सारी साधना जो है इस बदलने की साधना होती है। और एक तो बुद्धि में अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है बाहर से, संसार से। और एक बुद्धि होती है जिसमें सुख बुद्धि होती है। देखो, हम लेटे हैं तो शरीर के सुख की बुद्धि हो गई, हम बैठे हैं तो बैठना अच्छा लगता है तो सुख की बुद्धि हो गई, ये खाना बढ़िया लगता है तो सुख की। पर हमें चाहिए ऐसी बुद्धि जिसके अंदर विवेक हो, जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान एक साथ कर। तो ये विवेक बुद्धि जो होती है वो ईश्वर की तरफ मुड़ती है। अगर ईश्वर का नाम ना भी लो तो भी चलेगा, वो हमें ध्यान में सफलता देती, इसीलिए मंत्र हैं। तो देखो, अब शरीर को हमने कहा कि भाई तुम जो है आराम से अपनी स्थिति को बना लो, तो ज्यादा समय नहीं लगता। आंखें कोमलता से बंद हैं, और थोड़ा सा और हम शरीर को स्थिर कर सकते हैं। गर्दन के जोड़ को देख लिया हमने, वहाँ पे संवेदनाओं का अनुभव किया, तो मन ने कहा कि हाँ, शरीर ठीक ठाक है। सजगता हो गई, संवेदनाएं हो गई, और स्थिरता आ गई। तो ये शरीर की जो स्थिरता मन देखता है, ये वास्तव में मन की स्थिरता है। अगर हम शरीर को जोर देंगे तो फिर मन परेशान करेगा। कोई जोर नहीं देना, आंखें कोमलता से बंद, शरीर के स्पंदनों का अनुभव, और फिर जैसे गर्दन के जोड़ों को देख गए, कंधे, कोहनिया, कलाई, तो इसको हम जब देखते हैं, देखने का क्या मतलब है? सजगता। सजगता का क्या मतलब है? हमें अनुभव संवेदनाओं का हो रहा है। तो संवेदनाओं का अनुभव ऐसा होता है तो बुद्धि कहती है ये सुख बुद्धि है, अच्छा है, चलो कर लेते हैं ध्यान। अगर दुख बुद्धि होगी तो वो नहीं करने देगी ध्यान। तो ये दुख बुद्धि क्यों होती है? मन बाहर भागता है। तो मन बाहर भागेगा तो शरीर को इधर से उधर हिलाएगा डुलाएगा। तो हमने ये समझा कि मन को और शरीर बुद्धि को बदलना ही साधना है, असली साधना। तो हमारे ऋषियों ने जितने मंत्र दिए हैं, जितने भी महात्मा, बुद्ध हो, रामकृष्ण हो, ईसा हो, सब कुछ,
तो वो मंत्र पहले हम मन के अंदर डालते हैं, फिर बुद्धि से उसका ज्ञान लेते हैं। तो वो समझ जैसे बढ़ती है तब मन और बुद्धि बदलते हैं। उसके बाद विवेक की साधना होगी। तो अपने मन में ही 3 बार सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, जोर से भी कह सकते हैं, जैसा मन का भाव। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। मन अंदर देख रहा है और सजगता के साथ उच्चारण कर रहा है। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो देखो, एक तो ऐसे लोग हैं कि हम तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो पहले स्तर पे करते हैं, पहले स्तर पे से ही शुरुआत करनी चाहिए। पर भाई, जब तक इसका अर्थ नहीं जानेंगे तो मन नहीं बदलेगा। तो दूसरी बार हम 3 बार करेंगे फिर मन में या जोर से, और अर्थ को समझेंगे। तो अर्थ क्या हुआ कि सभी को, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु का अर्थ अगर हम देखें, मे देयर बी वेल बीइंग फॉर ऑल, सबके स्वास्थ्य की कामना। ज्ञान की बात हम तीसरे लेवल पे करें। तो देखो, दूसरा हमें अर्थ भी जानना जरूरी। पतंजलि जो गुरु जी हुए हैं, वो कहते हैं कि अर्थ के बिना मंत्र का उच्चारण निष्फल होता है। 3 बार सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, और सभी के सुख की कामना मन में। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हाँ, मतलब के साथ, अर्थ के साथ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो ऐसा कोई नियम नहीं है 3 ही बार करना है। वास्तव में तो गहरी साधना में हम उतनी बार करते हैं जितनी बार सजगता टूटती है। मंत्र से सजगता टूटी, मंत्र से हमारा मन जो है मशीन की तरह कह रहा है नहीं, फिर वापस करेंगे। और कई बार एक बार में ही सजगता बन जाती है। तो अब ज्ञान की बात, सभी के स्वस्थ की कामना। हमारा कौन कर रहा है? हमारा मन भाव से कर रहा है, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ। तो बुद्धि में है ज्ञान, मन में है भाव, उच्चारण जब हम करते हैं तो ज्ञान भाव के साथ जब हम करते हैं तो ये मन और बुद्धि बदलने लगते। अब क्यों बदलें भाई? जो हमारे अंदर ईश्वर की शक्ति है, तभी तो वो आएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि से की जो अंदर अपेक्षा बुद्धि है वो छोड़ दी, सुख बुद्धि है वो छोड़ दी। अब तो हमारा आश्रय जो है, डिपेंडेंसी जो है, वो केवल केवल उस पर है जो 3 बार सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
और देखा कि अब मन कहीं भटक तो नहीं रहा, मन अंदर जाने को कह रहा है, अच्छी बात। अब दूसरी लाइन, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सजगता मन के अंदर। तो मन से करते हैं तो अच्छा रहता है। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। अब अर्थ के साथ, तो अर्थ क्या हो गया कि सभी को शांति प्राप्त हो। क्यों कहते हैं ऐसा, इसकी हम बाद में करेंगे, पहले अर्थ के साथ। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। ये मन की जो अपेक्षा है, तीन जो इसकी बीमारियां हैं, आसक्ति, दुख सुख, दुख और सुख, डर, और तीसरा है भ्रम, जिसको मोह भी कह लो। इन तीनों के कारण हम अशांति का अनुभव करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वास्तव में शांति स्वभाव है, शांति ही ईश्वर है, और क्योंकि वो सब जगह है तो इसीलिए सब शांति के अंदर प्रवेश करें। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। तो यहाँ पे जब हम करते हैं इस तरह से साधना, तो जो बुद्धि है, अपेक्षा बुद्धि, जो बुद्धि बाहर भटकती है मन के साथ कि भाई यहाँ से मेरी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, वो रुकती है। और फिर दूसरी है सुख बुद्धि। तो बुद्धि तो उसमें उसको पता है, मुझे ये स्वाद वाला खाना पसंद है तो सुख बुद्धि है, ये कपड़े अच्छे लगते हैं तो सुख बुद्धि है। तो जब तक ये बुद्धि नहीं समझेगी कि सबसे ज्यादा सुख और शांति हमारे अंदर है, तब तक विवेक बुद्धि नहीं आएगी। समझ के करना है कोई भी साधन। सर्वेषां पूर्णं भवतु, तीसरी लाइन, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सभी पूर्ण हों, ऐसा अर्थ है। सब पूर्णता को जाने। क्या जाने भाई? जो आम है तो वो अपने आप में पूर्ण है। आम तो कभी नहीं कहता कि जो है मुझे अंगूर बना दो, हम ही कहते हैं बुद्धि के कारण। तो अर्थ के साथ, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। और अब ज्ञान की बात की, हम सभी पूर्ण हैं। तो अपूर्णता का अनुभव जब होता है, वो अनुभव मन के अंदर बना हुआ है, इसीलिए मन की 3 बीमारियां हो गई। और बुद्धि के अंदर अपेक्षा हो गई, और उसकी सुख बुद्धि वो बाहर की चीजों में ढूंढता है। तो ये पूर्णता का जो अनुभव है, ये हमें ईश्वर से मिलाता है, डर को दूर करता है। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। मन के अंदर ये गांठ बन जाए कि मैं पूर्ण हूं। जैसे ये गांठ पड़ेगी, मन आसक्ति को छोड़ देगा। भाई, आसक्ति इसीलिए होती है ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तब मैं पूर्ण होऊंगा, तब सुखी होऊंगा, तब मुझे प्रसन्नता मिलेगी। और दुख मिलता है फिर भी नहीं हम समझते, हमारा मन नहीं समझता। तो शुरू शुरू में हमने बातचीत की थी कि शरीर को बदलना आसान है, पर ये मन के संस्कार और बुद्धि, इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए साधना के बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसमें से हमने एक मंत्र को चुना। सर्वेषां मंगलम भवतु। सजगता के साथ हम कह रहे हैं 3 बार। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। अब सभी का मंगल हो, ये अर्थ बैठता है। तो देखो, एक तो हम कहते हैं सभी का मंगल हो, और एक भाव ये है, उसकी हम चर्चा तीसरी आगे करेंगे। सर्वेषां मंगलम भवतु। अब अर्थ के साथ कह रहे हैं, सभी का मंगल हो। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। सभी का मंगल हो। अब जरा मेरा मन यही कहेगा, बुद्धि उसका साथ देगी, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा ना। एक फायदा हुआ। तो निर्मलता में क्या होगा? मन आसक्ति नहीं होगी ना, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब तीसरी बात, ज्ञान की क्या बात है कि वो जो जो हमें संभाले हुए है, जो जिसको ईश्वर का नाम ले, जो मुझे हमें संभाले हुए प्रति क्षण, वो मंगल स्वरूप है। इसीलिए हम इस मंत्र का उच्चारण करें। कोई भी हो, कोई भी देवता हो, देवी हो, ना भी हो तो चलेगा। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। सर्वेषां मंगलम भवतु। अब एक प्रयोग छोटा सा हमने इसमें किया। जब हमारा मन ओम कहे, तो मन की दिशा को बदलकर और मन को ले जाना है हृदय के अंदर,
जैसे एक गहरी गुफा और के अंदर जा रहा है। प्रयोग है। क्या प्रयोग है कि मन की दिशा बदल। तो ओम कहते हुए तो मन को उस गहरी गुफा में ले जाना है, और शांति 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 जब हम कहेंगे अपने मन में, तो ऐसा देखना है कि मन रुक गया क्योंकि उसने अपने सच्चे अस्तित्व को देख लिया और उसी से फूट रहा है। जैसे दिया जलाते हैं ना, बाती है, तो बाती तक पहुंचना है ओम, और अग्नि हो गई शांति शांति। फिर ठहर जाना है मस्ती में, हड़बड़ी नहीं करनी। और फिर शांति शांति शांति। जो कितना सरल और सुगम साधन है। आंख बंद करके भी कर सकते हैं और आंख खोल कर भी कर सकते हैं। सुबह भी, शाम को भी, दोपहर में भी, काम करते हुए भी, कभी भी हम यह साधना कर सकते हैं। तो नियमित रूप से अगर हम करते हैं, उसके बाद हमने चेक किया कि कितनी देर तक इसका प्रभाव है। ओ, प्रभाव खत्म हुआ तो मन कारण है ना भाई, ये मन और बुद्धि, मन और बुद्धि जो है ये हमें चकमा दे रही है, तो इसीलिए इसको बदलना जरूरी है। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ऐसा नहीं है हड़बड़ी में कह दिया, हमें पता है ओम कहते हुए हृदय के जो गुफा जो है उसके अंदर जाना है। वहां पर दिया है और बाती है, अग्नि क्या है, शांति शांति। इस तरह का भाव जब हम करते हैं, बहुत सारे भाव हैं, तो ज्ञान समझ के साथ जब हम भाव करते हैं तब ये जो मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शांति शांति शांति। और अब धीरे से आंखें खोल लें। ओम शांति शांति तो करें, अनुभव करें।
तो देखो, ये जो शांति का अनुभव हो रहा है भाई, ये जो अनुभव हो रहा है कि मन की दिशा बदली। मन थोड़े समय के लिए मन की तीन बीमारियों से दूर हटा, और कोई कारण नहीं। और क्या हुआ, जो अपेक्षा की बुद्धि थी और जो सुख बुद्धि थी, बुद्धि ढूंढती है ना, अच्छा इस चीज में सुख, इस चीज में सुख, वो अपेक्षा और सुख बुद्धि से अलग हो गई। तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया है, इसी को तो हम कहते हैं विवेक। कोई भी साधना करो, अगर विवेक जागा नहीं तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा भी विवेक है तो ये तीन जो बीमारियां हैं मन की, इनसे मन हटता है। बुद्धि सहयोग करती, और नहीं तो उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कैसे हो गया? तो उल्टा ऐसे हो जाता है भाई कि एक जवान आदमी, उसने देखा एक लकड़ी का गट्ठर है नदी में। ओ, तो फिर मैं नदी के पार कर सकता हूँ। तो वो लड़का जो है, उसने लकड़ी के गट्ठर को पकड़ लिया। ये पहला स्टेप है आसक्ति का। ये चीज अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा है, संसार में ये है, हम उससे जुड़ गए। तो भाई, लकड़ी के गट्ठे को उसने पकड़ लिया, नदी में अपना बहता गया। बीच रास्ते में जब गया, तो उसने देखा, अनुभव किया कि भाई ये लकड़ी का गट्ठा मैंने पकड़ा हुआ था, अब तो ये मुझे पकड़ रहा है। ये क्या हुआ? काला सा रहा होगा। फिर दूर और गया, नदी में और गहरे में गया, तो उसने देखा इस लकड़ी के गट्ठर के दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं। अरे ये क्या हो रहा है? और फिर देखा एक लंबी पूंछ भी, और उस पूंछ का झटका बार बार उसके कमर पे पड़ रहा है। भाई ये क्या हो गया? यही खेल है मन का। तो हमने क्या बात की थी? तीन बीमारियों की: आसक्ति, दुख और मोह। अब ये 3 से 8 हो गए। तो दो हाथ कौन से हो गए? कि इच्छा का पूरा होना, इच्छा का पूरा नहीं होना। और दो पैर हो गए, एक तो मोह हो गया। और एक गीता में कृष्ण कहते हैं कि मन का लॉस ऑफ मेमोरी, कि हमें क्या अच्छा है। अर्जुन को भी हुआ था ना, क्या अच्छा है क्या बुरा हो, वही वो दूसरा पैर हो गया। और पूंछ हो गई बुद्धि भ्रम। अब ये बुद्धि अपेक्षा और सुख बुद्धि में बाहर लगी रहती है। तो ये क्या हो गया? वो लकड़ी का गट्ठा जिसको हमने चाहा था, अब वो मगरमच्छ हो गया। ये समझना है इस कहानी में। और हमें पता ही है, मगरमच्छ एक बार जब पकड़ ले, छूटा जा सकता है। छूटने का उपाय क्या है? विवेक। तो विवेक बुद्धि रहे, तो उससे छूटने के लिए सुख बुद्धि समझना है। ये खाना हमें बढ़िया लगता है, अच्छी बात है, पर आनंद मेरे अंदर है, ये याद रखना। अपेक्षा बुद्धि,
तो भाई शरीर के प्रति अपेक्षा तो रहेगी भाई, हम नौकरी जाते हैं, काम करेंगे, तनख्वाह मिलेगी, ये सब तो रहेगा, खाना खाएंगे, ये सब, इससे दुख नहीं होता। पर जब हमारा मन आसक्ति में से जुड़ जाता है, तब अपेक्षा हमेशा रहेगी। जैसे लकड़ी के गट्ठर से जुड़ गया कि आजा नदी पार कर लूंगा। क्या मतलब हुआ नदी पार कर लूंगा? अरे बड़ा दुखी हूँ, आज ये खाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, मुझे ये मिल जाए तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये है लकड़ी का गट्ठर। तो होता क्या है कि एक तो संसार जो बाहर है, अगर वो विवेक बुद्धि से हम संसार को देखते हैं, तो ये इस संसार से सुंदर कुछ नहीं है ही नहीं। ये संसार बहुत ही सुंदर है। किसी व्यक्ति ने आके प्रशंसा की, संसार, हम फूल के कुप्पा हो गए। और उसी संसार में से दूसरे व्यक्ति ने हमें दुखी किया। संसार ही तो है, तो हम विवेक बुद्धि ने ये समझा कि भाई ये जो दुखी कर गया है, इसके पीछे भी कोई राज है। इससे मुझे सीखना है, सुख से भी सीखना है, दुख से भी सीखना है, समस्या से भी सीखना है, समाधान से भी सीखना है। और एक संसार हम जो बना लेते हैं, वो आसक्ति, दुख और सुख और मोह का संसार बना लेते, दो संसार में रहते हैं। हमारे गुरुओं का केवल इतना ही कहना है, जो संसार मेरे मन ने बनाया है उसको हटा देना है। जो मन का संसार बना हुआ है उसी को बुद्ध कहते हैं संसार दुख है। और उदाहरण से समझो, हम सब जाते हैं वेकेशन पे, अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। पर ये बताएं, ये समझ विवेक बुद्धि लाएं कि जो घर पर हम खाना खाते हैं, उस खाने से अलग खाना हमें वेकेशन पे मिलता है। घर के अंदर जो आकाश है वो भी वही है, और जो वेकेशन में हम होटल में किराए पे रूम लेते हैं उसमें भी वही आकाश, पानी भी वही, पृथ्वी भी वही है। पांचों तत्व एक जैसे हैं। तो क्या बदला भाई? वेकेशन में हमें बड़ा आनंद मिलता है, बदला क्या? ये जो बदला वो हमारा मन और बुद्धि है, और कुछ नहीं। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना, 5 स्टार में चाय पी के आए। भाई चाय में क्या अंतर है? यहाँ बैठे वो भी पृथ्वी का भाग है। ये विवेक बुद्धि। और आसक्ति बुद्धि ओ, हम तो 5 स्टार में खाना खा के, ये आसक्ति बुद्धि, मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, ये समझना है। तो दो संसार में हम रहते हैं। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, तो एक जो संसार हमारे मन ने बनाया हुआ है, ये संसार हमें दुखी करता है। जो संसार है, जैसा है, वो कभी दुखी नहीं करता। वो संसार सबके लिए एक जैसा है। समझना है इस बात को। समझना मतलब विवेक बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि को हटा के।
एक संसार जो है वो सबके लिए एक है। चाहे तुम अमेरिका में रहो, भारत में रहो, स्वीडन में रहो, यूरोप में रहो, कहीं भी रहो, वो संसार एक है, सबका ही संसार है। दूसरा जो संसार हम आसक्ति, मोह से बनाते हैं, वो दूसरा संसार है, वो भ्रम का संसार है। तो उसी संसार को हम कहते हैं, उसी संसार को बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुख है। एक संसार ऐसे का ऐसा ही है। फिर वापस उसी उदाहरण को लें कि वेकेशन में गए तो भाई सूरज वहां भी तो वैसे ही उगता है जैसे मेरे घर पे उगता है। इसका ये मतलब नहीं नहीं जाना, पर उस संसार में अपेक्षा बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तब मन बदलेगा। सूरज उसी तरह से उगा, सूरज उसी तरह से डूबा, पांचों तत्व, पृथ्वी वगैरह, वायु वगैरह, सब कुछ एक जैसा ही था। ये सब भी एक है। और दूसरा जो संसार है जो मन ने बनाया, उसमें हमारे मन के अंदर दुनिया भर के संस्कार जमा रहते, और वो संस्कार मगरमच्छ बना देते हैं। तो इस विवेक बुद्धि को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। हम सजग हैं, सजगता पहले चाहिए ना। विवेक बुद्धि में सुनने की योग्यता चाहिए ना। तो उदाहरण लो, एक प्रकार से छोटा सा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। हमें खीर पसंद है। किसने देखी खीर? आंख ने। पसंद क्यों है? तो पसंद हमारे जीभ ने पहले उसको चखा था। तो अब देखो, विवेक बुद्धि पीछे नहीं है। तो जब वो विवेक बुद्धि नहीं, अपेक्षा बुद्धि आ गई, तो हमें पसंद है, अपेक्षा बुद्धि आ गई, खीर देखी और हमारी आसक्ति। तो देखो, हमने ये समझा कि ये आसक्ति ओ इस तरह से आती है। तो मन बार बार जब इस तरह का विचार करता है खीर का, तो यही आसक्ति इच्छा में बदल जाती है। इच्छा मतलब पूरा करना, बाहर से पूरा करना। क्यों पूरा करना? क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है। पर खीर में तो आनंद है ही नहीं। खीर ने कभी कहा ही नहीं कि मेरे अंदर आनंद है, ले लो। भ्रम आ गया। तो वही मगरमच्छ आ गए, और मगरमच्छ ने हमें पकड़ लिया। इसीलिए मोह हो गया, हमने दूसरा संसार बना लिया कि भाई देखो, एक को खीर पसंद है, दूसरे को नापसंद है। कैसे कह सकते हैं कि उसमें आनंद? ये बात बुद्धि के अंदर उस समय तक पहुंचानी है जब तक हमारा मन और बुद्धि की दिशा ना बदल जाए। बार बार मनन करना है, विचार करना है कि बाह्य संसार में जो कुछ हो रहा है, बाह्य संसार में जो कुछ हो रहा है, मेरे पूछे तो नहीं हो रहा।
बिल्कुल नहीं हो रहा, मेरे पूछे तो नहीं हो रहा। मेरे पूछे तो मैंने जन्म नहीं लिया, ना मेरे पूछे मेरी मृत्यु आएगी, ना मेरे पूछे जिस व्यक्ति से विवाह होना था वो भी नहीं मेरे पूछे हुआ, जिस तरह के माँ बाप मिलेंगे वो भी नहीं हुआ। तो भाई आसक्ति क्यों? पकड़ना क्यों? स्वीकार का भाव हो। सुबह उठे, सूरज उगा, मंगल सर्वेशां मंगलम भवतु। लोगों को देखा, सर्वेशां पूर्णम भवतु। समस्या आई, सर्वेशां शांतिर्भवतु। चलेगा। और मन जब इधर उधर दौड़ रहा है तो सर्वेशां स्वस्तिर्भवतु। हमने क्या किया, जो मन विचार कर रहा था आसक्ति की तरफ, एक संस्कार बने हुए हैं, वो इसी ढंग से सोचता है मन। तो वहां पे बुद्धि के द्वारा इस मंत्र को स्थापित कर दिया मन में ही। तो वो क्या हुआ, जो अपेक्षा की बुद्धि है, जो सुख बुद्धि हमारे बुद्धि के अंदर है, वो विवेक बुद्धि में बदलेगी। ये भाव हमें याद है। क्या याद है? शरीर को बदलना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अभी एक मित्र ये कह रहे थे कि देखो, ये दूसरा घुटना काम नहीं कर रहा, इस घुटने को बदलवाना। तो विज्ञान ने तरक्की कर दी। भाई अब मन और बुद्धि को ऑपरेशन करके कैसे बदलेंगे? वो तो समझ के ही बदलेंगे। तो जब हम अपने बनाए हुए संसार में रहते हैं तो ये तो तय है कि हम दुखी भी होंगे बहुत ज्यादा और सुखी भी। और जब हम उस संसार में रहते हैं जो सभी का एक जैसा है, सभी के लिए है, तो उसमें हम बुद्धि और मन को इस ढंग से दिशा देते हैं कि सुख आया तो प्रेम से स्वीकार कर लिया, दुख आया तो प्रेम से स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी भलाई, इसी में मेरी भलाई। तो भलाई में कब देखेंगे? जब विवेक की बुद्धि होगी। तो जब विवेक बुद्धि होती है तब हमारा विकास होता है। और कोई मुश्किल नहीं है। हम बुद्धि के द्वारा, सजगता के द्वारा ये पहचान सकते हैं कि हमें इस मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। मन की बेचैनी, मन में द्वंद्व, मन में ईर्ष्या, मन में द्वेष का अनुभव हम कर सकते हैं। ओ, इसी कारण एकदम बुद्धि के द्वारा उसको पकड़ना है।
हम क्या करते हैं ऐसी परिस्थितियों में? हम अपना इलाज खुद करने लगते हैं। मुझे बहुत से लोग यहाँ कहते हैं कि अच्छा, मैं एक बार जब स्ट्रेस होता है तो मैं नहा लेता हूँ तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लेता हूँ तो ये समस्या दूर हो जाती है। अरे फिर उसी संसार में वापस आ जाओगे। तो स्व चिकित्सा प्रभावी नहीं होती है। एक देवी जी हैं, वो कहती हैं मैं तो 3 गिलास, 2 साल से जब भी मेरे को स्ट्रेस आता था तो 3 साल से मैं 3 गिलास वाइन पी लेती थी। तो मैंने कहा अब क्यों आए? वो कहते हैं अब रियलाइजेशन ये है कि ये 3 गिलास भी कम पड़ता है। मैं दुखी हो गई। तो अभी उसने 2-3 महीने से मेरे साथ में है। हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि मन बेहोश है, विवेक नहीं है, तो इसलिए पता ही नहीं लगता उसको। ये मन जो है, मगरमच्छ ने हमें पकड़ा हुआ है, और ये मगरमच्छ मन के अंदर है। विचार तो करना होगा, बिना विचार किए विवेक नहीं आएगा, और बिना विवेक के संसार के दुखों से छुटकारा नहीं है। ये नहीं कि हम संत बन गए। जीवन के जीने का ये सही तरीका है। तो क्या हो जाएगा फिर? अब उस पर भी विचार करें। तो विवेक बुद्धि आएगी तो मन जो है दर्पण हो जाए। दर्पण होने का क्या मतलब है? कि हम सामने गए, हमने देखा, कोई दूसरा गया, उसकी प्रतिबिंब आ गया, तीसरा गया, उसकी इमेज आ गई। मन हमेशा खाली रहेगा, दर्पण की तरह। कोई गया उसके सामने तो आ गया, नहीं गया तो खाली। क्या होगा? संस्कार नहीं बनाएगा मन। कल किससे लड़ाई हुई थी 1 साल तक याद? संस्कार नहीं बनाएगा। एक तरह का तो मन ये होता है। और एक मन होता है कैमरे की तरह। भाई कैमरे में सामने तो नहीं देखता, पर आजकल तो सेल्फी कैमरा आ गए। पर होता क्या है कि ये कैमरे की वाला जो मन है, ये जो कुछ देखता है, सुनता है, समझता है, दुख करता है, सुखी होता है, वो सारे संस्कार बना लेता है। संस्कार कैसे बनाएगा? वही 3 बीमारियां मन के अंदर रहेंगी तो। हम बड़ी प्रसन्नता से बात करते हैं। आज से देखो, मैं जब 10 साल का था, मेरी ये पिक्चर है, तो मन भी ये कहता है कि 10 साल पहले जो दुखी हुए थे, ये लो संस्कार। तो उन संस्कारों के प्रवाह से हमारा मन वापस उसी जगह पहुंच जाता है। मन को दर्पण बनाने के लिए हमें यह समझना होगा कि अपेक्षा की बुद्धि को छोड़ना होगा। शांति शांति शांति।
जितना ही करेंगे। Our own mind and intellect. It is easy to discipline the body. We have many physical means. Vibinba is saying me yesterday, I have to replace my knees. Yes, you have to do nothing. Go to a doctor. Get your knee replaced, kidney replaced. Some now the heart is also transplantation has come. But in entire sadhana, our mind and intellect should be changed. That is the whole thing. So, mind with the 8 factors that we have covered, 3 diseases of the mind: attachment, detachment, results into sorrow, suffering, and delusion or wrong understanding, and that results into loss of memory and intelligence. So, when there is a loss of memory and intelligence, then we create another world in our mind. We live into that world. One is a common world. Say, for example, you go on vacation. So there it is, the pleasure intellect is working. Viveka intellect is not working. So that pleasure intellect is working because of the mind is living in its own world because of delusion. There is no Viveka intellect. Now apply the Viveka intellect. So we have to do a lot of contemplation and reflection about our life, and when it happens, then now apply the Viveka intellect. What is different in vacation and what is different in the house? Earth is the same, room is the same, except colors have changed. Beach means water, water is the same. At vacation, at my home. You see, food is the same. Food is made from the same stuff, whether vegetarian, non-vegetarian. You wear the same clothes. So pleasure intellect does not apply this logic. So when it does not apply the same logic, mind says, now what a great vacation I had. What a beautiful woman is, and long list. So one is the real world. You wake up in the morning and the Viveka intellect perceives the world as it is. But the mind has created another world based on same attachment and loss of memory, intelligence, desire, fulfilled, not fulfilled. How many desires we have fulfilled and how many desires are not fulfilled? It happens every But it can be Nitya karma. day. Yeah, Nitya karma comes because of Viveka intellect. So you see that to change this mind and intellect,
takes time, lot of contemplation and reflection. The time comes, then our intellect thinks, it is the same mind who lived with a person, agreed 99%, and suddenly you refuse, you react, or the other guy reacts, and every relationship is gone. So, our relationship is based on the mind that has created a world based on attachment, desire, delusion. Loss of memory means what is right and good and what is real. We throw everything. No, I gave you so many things, I help you to live your life, and everything is gone. So mind has created its own world. That world Buddha says is full of sorrow and suffering. This world, that world is common. We share common earth, we share common five elements, we share the same the body, the no, that has no problem at all. There is no problem. Whether you live there and I live here, there is no difference. So that is one. So now keep in your mind the mental created world, which we say me world. I have money, I don't have, I'm attached, I'm not attached, I married and I divorced, and all this stuff. And the other world is as it is. It That world which is common, I cannot see clearly. Why? First, the me word. Second is the intellect you can categorize into three categories. One is the expectation intellect. Second, pleasure intellect. I gave you an example too about this going on vacation. But now I have 50 pairs of clothes. Wow, what a great pleasure! What a great pleasure! I have uh, all the, whatever I want, all kinds of pleasure. So that intellect, because of expectation and pleasure, it is constantly moving outside, supporting the mind to live this kind of a life. And the third intellect is viveka. When you have that viveka intellect, you are my honey, very good. Minus expectation intellect, minus pleasure intellect. So, from your side, the relationship to the world outside is very good. You have no problem at all. If others have a problem, let them have a problem. They are the part of the world. But you continue to live with that viveka intellect. Pay attention. It is very easy to change the body, but very challenging to change the mind and the intellect. That is why it is known as sadhana. So now continue with the viveka intellect. Everyone has a right to practice any meditation or any sadhana. Huh? Our dear friend Boris does lot of sadhanas. So the pleasure, but his focus is the pleasure intellect should remain intact. He does the practice very intensively. He is very committed for a week.
So during that week, the pleasure intellect is gone, Viveka intellect comes, he finds problem is solved. After a few months, same problem. I'm disturbed, terribly disturbed, I divorced, now I'm living separately. Pleasure intellect. I didn't hear from him for the last almost 6 months. I hope I will get another news that I got married. Very happy. So I have to understand this. Viveka intellect, I must contemplate and reflect. Is that relationship to the world coming from the me world or the real world? So now we are a seeker, so we keep the Viveka intellect intact, and now I do some practice. Anyone has every right to do any practice. They can Google out, they can find the practice, and they can do the practice. Viveka intellect ask a question that yes, I have a right. Everyone has a right to study, read, do any practice, but am I qualified? Viveka intellect asked this question. If I have the right to study anything, no problem at all. Does it mean that I am also qualified? The answer is no. That is why the entire journey of Eastern wisdom says you should become qualified. You should become a seeker, from a person to a seeker. You don't change anything in the physical level. You change your mind and you change your. See that? That needs to be reflected again and again. That needs to be reflected again and again. So, what happens when you reflect on this? The intellect asks you a question. What is that qualification? What is that qualification? So, the intellect is going to answer your question, and that is going to change the mind. Because the intellect, if it has a clarity, so remember the clarity is that clarity will not come if the mind is dictating the intellect. It is pleasure intellect, it is expectation intellect. Because they are the attributes and characters of the mind. I need to be aware, I need to reflect on it, and the more you reflect, the time comes you wake up in the morning, you are totally relaxed. You lie down on the bed in the evening, you had a sound sleep. Me word is slowly. So, what exactly it means qualification? So, I converted that into 4R that we did the practice last time. So, I want to go a little deeper. Recognize, receive, retain, and realize. 4 words. If the knowledge is realized, you are there. And the knowledge is realized in stages. Why it is realized in stages? Because of the me world. Take a simple example that you have heard maybe millions of times during these years, that I am the real self. Real self is permanent peace, happiness, love, and wisdom. It is like I am a sugar cube. So have a dialogue with the sugar cube.
I want to put you near the salt. What is your reaction? No reaction. I will remain sweet. It is not pleasure intellect. It is not expected intellect. It is viveka. I am real self. Done. Now, if I ask the sugar cube, should I put you in a small jar? No problem. I will remain sweet. No, I will put you in a big jar. I will remain sweet. I have $10 million in a bank account. I'm still sweet. I have nothing. I'm still sweet. This can only be recognized by the Viveka intellect. There is no other way. That intellect only get rid of the mind that is attached to something else. This way I have to think. I have to reflect. I have to contemplate. We are talking of qualification. I am single, no pleasure intellect, no expectation intellect. I only have a Viveka intellect. Married, I only have Viveka intellect. Divorced, I only have Viveka intellect. Or otherwise, this mind will going to give you a shock in the world. Secondary level is that you do all the practices, but the knowledge is not clear, so no practice can help us reach to the highest. That is what happened to Buddha for 7 years. He got a Hatha Yoga master and he said, you keep standing on one feet, sleep on a hard ground on the earth, eat only once a day, do fasting for 7 days. He was reduced to skeleton, bony structure. People have depicted couple of the pictures in Buddhism about Buddha. Only when Alar Kalam met, but before Alar Kalam met, see that. So that was the day when Master told him that after 7 days, now today you can eat your food. And then he ate the food. His mind was very calm. He was sitting under a tree, and suddenly the Viveka intellect awakened. I ate my food. Body is not offering any resistance and reaction. I feel the calmness inside. Pay attention. With the pleasure intellect or the expectation intellect, I never felt that sense of calmness. I was sleeping on the floor where even there is a mosquito bites. I was also sleeping in the kingdom on a princely bed. He compared, he said, this calmness has nothing to do with the body. It has to do with the mind. If the mind is going to the pleasure intellect, expectation intellect, this is going to happen whether you are sleeping in a big house on a golden bed or you are sleeping on the ground. Then the master appears and Alar Kalam said, now you come with me, Viveka intellect. Come back to the same topic. Viveka qualification number 1. Recognize. Recognition is the beginning. I have to recognize this. Me word, Viveka intellect, and the real word. Recognition. Recognition by awareness. When you use the word recognition in English, we have in modern psychology, your honey, my honey is already studying psychology. So you can ask her cognitive behavior therapy, CBT.
this is what the cognition is. We cannot use the word CBT because American Psychological Association will sue us. Only difference that with that CBD, they recognize the symptoms. They don't recognize the root of the problem. In our recognition, we recognize the me word is creating all the problems. I should contemplate and reflect. Recognition is the beginning, and that recognition comes when I think of it. Think of it, real self is full of peace. So start in a positive manner. When you wake up in the morning, am I calm? No. Why? Blame the me word. Apply the Viveka intellect until that thought and that feeling disappears. So you are ready for the day to do the Nitya Karma. And it will take only 7 days when this Viveka intellect is settled. Every day. So from every day, what will happen? You do it for 7 days, the mind will form a new habit, and then what will happen? You maintain the Viveka intellect in all your transactions with the world outside. Honey says, I hate you, you say, I love you. Viveka intellect. Internally, all relationship is based on the me word, so I have no problem. You hate me or you love. Do it. So we are understanding, am I qualified? And the first step is the recognition. Recognition. So once I recognize this, another level of recognition is the mind holding on to the real self by the intellect. Peace is my essential nature. I am Taurus, I am David. Everyone holds on to his name or her name. Someone says, where is David? And there are 5 David. Every David starts looking at me. Can the mind keeps looking at the real self? So that will continue to make you understand. Realize that I was living in a me world and now I'm living in a real world. Instantly, it will help you to raise your awareness. It is important. It is necessary. So our goal is, in this session, we are understanding, am I a seeker? Am I qualified? I have a right to study. I have studied everything. I have read everything. I have enough knowledge. But question is, am I qualified? So if that recognition lives in the intellect and the intellect reflects expectation intellect, pleasure intellect drops. Now the intellect is free. It can take an action on the mind. Then only it can take an action on the mind. Otherwise, the mind has already colored this intellect with the pleasure intellect, with expectation intellect, and that is why we are not able to do the nitya karma as it is, because the mind interferes. Mind interferes. You see that we go to store. The mind already knows what to buy. We have thousands of items in the store.
but mind knows where to go, what item to pick, put it into the cart, pay it, and return. The moment we wake up, we should be very clear. That is what the Viveka intellect says. I am doing Nitya Karma for the real self. That is why I will do the Nitya Karma to the best of my ability. So that mind is holding on the knowledge of the real self at every moment in the waking state. So, holding on to the real self, not holding on to the me word, is Shraddha, is faith. Faith is nothing but it is an awareness that I am holding on to the truth. You are holding on to the exact address of your home, that is your Shraddha or faith to the home. You know your honey, that is your faith to the girl that you live with. But because of the me world, because of the pleasure intellect, because of the expectation intellect, mind forgets to hold on to that real self. Think like this. It forgets. So forgetfulness means you are living in the me world. So I have to live that awareness that I'm holding on to this truth. So what happens? We talk, I believe and I don't believe doesn't matter. Now you are holding on to this truth, to this real self, as a knowledge. You have two qualifications crossed. Because every time this mind will run after the me world, and every time I have to bring it back inside my head. You have to do nothing outside. Don't do anything, but internally. So when you are contemplating and reflecting, you have crossed these two qualifications. You will experience calmness and peace. That faith, that awareness will increase the faith and drop the me word, drop the pleasure intellect gradually, slowly. Knowledge is realized in stages and expectation intellect. So we have understood the two qualifications. I told you the story of log of wood. Boy is sailing. No? And that Yes, yes. log This of wood, crocodile. yeah, log of wood, appears as a crocodile. It is not. Yeah. It is the me world. So when the mind experiences this sense of anxiety, fear, insecurity, etc., I said, drop it. It is the crocodile. Recognition first. Faith is the second. In that faith, we are holding on to this knowledge. You see, the crocodile has come up again. How many times my project succeeded? Did it give me permanent peace or happiness? Answer is no. Pleasure intellect works. Mind and in the me world. We need only that contemplation, that knowledge, that awareness. So when I'm holding on,
Now, see, another problem in the journey of a seeker comes. I know I'm holding on to the real self, in the name of Krishna. I do the japa every day for 2 hours. So, what you do after 2 hours? You enter into the me world, you enter into the pleasure intellect, you enter into this. Why you should change? Your mind is not changing. It changes for a certain period of time. That is why the third qualification is that now I'm holding on. But now I will inquire. I will go little deeper, applying these principles. Applying these principles, what it means, I recognize. Now I'm receiving the knowledge. Receiving the knowledge. So what knowledge I received? Like a sugar cube, like a log of wood. So what is going to happen when you are reflecting in your mind? You will be able to remember the same events that happened for many years, which did not lead you to peace and happiness. It pushes you to live in the me world, will drop. Naturally, it will drop. So, why we are saying this? Because if I do not contemplate and reflect, mind and the intellect have already made its habit, and the habits are very hard to die. Come on, I eat this food, it gives me a pleasure. What a fun if I don't eat it. So the pleasure intellect returns. So the doubt remains. That is why, to remove that doubt, we need to contemplate and reflect. That is what we have been talking. Manan, second step. Retain the knowledge. How the knowledge will be retained? What's your phone number? Oh, this is. No, let me write it. Why I write it? In order to retain it. So that I can recall it. Oh, tell me once again. I want to be sure. Oh, yes, I want to retain it. In a common day to day living. So holding on to that knowledge by contemplation and reflection. Why we contemplate and reflect? Mind has lot of confusion, doubt, duality, fear that I will lose everything what I possess. I will lose everything what I possess. Okay, so how much money you have in your account? 2 million. Very good. Very good money. Does that money chase you? Do I have a pleasure intellect that I have 2 million? I am very happy. What is going to happen tomorrow? Do you know? Yes, of course. To having money, the reason is happiness. So the pleasure intellect is working. Yes, yes. Pleasure intellect. So now I go to a reflecting to the next level. Will the money protect me from any problem tomorrow? If I die tomorrow, will the money chase me and protect me? For sure, no. No. So, how and why I feel that sense of pleasure? That is coming from the me world. It is not that I'm throwing the money. I'm not doing anything outside. I want to realize my own nature. That is within me.
that is always with me. These are the coverings, these are the clouds. So the intellect reaches to that level of awareness where it feels the money is a power of exchange, it is for utility, it is not for pleasure. I need a comfort, I'm already getting a comfort. So that refines the mind, that destroys the me world, which is constantly full of seeking pleasure from the world outside. I have to live into that state of awareness. So why we learn these principles? Because these principles helps the mind and the intellect to move in a particular direction. If I want to study physics, I must move in a particular direction. You are a teacher and you are teaching me matter consists of atom, and then I interfere, cell also consists of atom. Is cell an atom? I need to drop it. Now I will talk about cell later. First understand physics. See, simple. It's not difficult. Now you're a seeker, so now we can talk. I talk of the atom, and we should not talk of the cell. So why we talk of the cell? Because the mind is wandering. Why mind is wandering? Because it is of the me word. So what to do? Return the mind to the atom. Return the mind to the real self. Just internal awareness. When the mind is not distracted. It is not wandering. Simple. When the mind does not understand, then the mind says, how dare you can remove the me word? Struggle starts. Doubt starts. Intellect has to be there. Viveka, intellect has to be there to remove this doubt. Because when the doubt remains, mind continues to live in the me world, then we are doing the practice. So there are subtler layers of reaction and conflict erupts. That makes me forget the entire sadhana. That is why we say that mind should be single pointed. Not in a sense that I must focus. I force my mind to focus. Now, with understanding, with clarity that me world has been with me, it is a false, it is a delusory world. I have a clarity, then the mind does not repeat the same thoughts for the pleasure or likes and dislikes. That crocodile never enters into the mind. That mind is naturally focused. We are talking of that. Yeah, try. No, I want to focus. I want to focus. So focus in modern psychology and in the world outside is totally different than what we say focus. Our focus is totally, you see, your mind internally finds a comfort level. I moved my body. Why? To move to another level of comfort. If the mind wants that comfort based on the me world, it will never happen. It will never happen. Through contemplation and reflection, when we do this, it is an easy. But knowledge has to be realized in stages. Every day, every moment, I live into that. Then comes now what happens. You have the first three steps are clear, and then comes the real Shravanam.
Now you listen, your mind is ready, your intellect is ready to receive that knowledge. It holds on into the memory, it never forgets. And then you start with another level of contemplation based on the principle. So, what happens in Shravanam? I told you, Shravanam, I don't know, let me know it. So now I know the knowledge is there. I do not understand, let me understand it. So now that understanding is supported by the faith, by the Viveka intellect. Previously, it was being supported by the pleasure intellect and the expectation. And it was searching the real self in the me world. Crocodile is holding me, and I'm searching how to become free. And I'm enjoying that. So, that level is the biggest challenge in the life of a seeker. Internally, my awareness level becomes very intense, doing everything. Mind is totally natural because now it has intellect, makes the mind understand that I'm not living in the me world here and now, whether I'm in the office, whether I'm driving, whether I'm doing a practice of meditation. That is why I added some of the elements that here is the knowledge, here is the practice. So once we have awakened this Viveka intellect, so first thing that I have already discussed, mind goes outside every time when we want to know our true nature. That is an extreme level, very subtler level of the me world. Mind says, now I don't have any distraction. I agreed. But still, that goes outside and it causes the distraction. Second, because of sanskaras, the mind, the self inquiry derails the inquiry. And the third problem, the mind goes back to the not self. Not self means the material world, to the body, to the mind, to the breath, to the intellect, to the thoughts. So the Viveka intellect must contemplate and reflect again and again, recognize, recognition level of 1 makes me aware I should be qualified. Recognition level 2 makes me qualified to understand what is faith. Recognition level 3 makes me aware that here is the faith. I have to simply hold on to this knowledge. I have to simply hold on to the truth. I have to simply hold on to where is my home. That is what we do in subconsciously and habitually. I have worked hard, now let me return home. So when you make this very casual, natural, and daily affair from moment to moment, because it is not happening moment to moment, the mind says, oh, continue to live in the me world, nothing will happen. Very subtler level. We feel some vibes inside. Oh, let me have a cup of coffee. So Viveka intellect comes. Do you really want a cup of coffee? Yes, no problem. Go there, take it. Pleasure intellect, gone. You're taking a coffee that is same either with the pleasure intellect or Viveka intellect. That makes the difference.
That makes the difference. Why I told you in the beginning that to change the physical, to have a physical discipline is not a big deal. We can medicate this body, we can transplant. Problem is mind and intellect. Me word and the intellect, it should continue to work with Viveka intellect. I think my master used to give an example. The rope is hanging 10 meters above the ground. What we need? Mind should not go outside and start liking someone while moving on the rope. Mind should not start thinking of what food I will take after I cross the rope. That is distraction. Mind is looking at the rope but looking into the mind. It is a focused mind. Then you are a seeker. And when we are a seeker, so what we were talking about level of, we can study anything. The intellect gathers the knowledge, accumulates the knowledge, and everyone has a right to study, read, know it. But at the same time, I have to ask whether I am qualified. So when we say qualification, first is awareness level, and then I recognize what I want. Recognition level is the first level. What I want. So I become clear what I want and why I want. I have a realization the mind is living in the me world caused by the 8 factors, or you will remember the crocodile. Now, see, we both are aware together, making the body at ease and comfort, no issue. So, when we are aware, the mind jumps to a thought. So, you examine that thought whether it is going and in relationship to the 8 factors. What are the 8 factors? The objects in the world. Because they live in the mind, so I have to take over the mind. Objects live in my mind. Objects do not chase me. Mind has a. So then we are sense organs. So there we check, are the sense organs have liking and disliking? No, they are material. No sense organ has liking or disliking in them. We have to change the mind, so everything is happening in the mind through the Viveka intellect. The third factor is attachment and detachment. Oh, sense organ has no understanding of what it likes or dislikes. Objects do not chase me for like and dislike. But then where is the attachment? What is attachment? Emotional dependence. What is dependence? That is why my mind is thinking again and again of the same thing. It may be a wealth or a honey or a girl or coffee or tea, anything. I'm just looking at it. Oh, this dependence. That is why the mind is repeating these thoughts again and again. Oh, yes. The Viveka intellect is reflecting on this internally.
whether your eyes are open or attachment and detachment is there. So that leads to desire. Yes, that leads to desire. You see, you cannot see like and dislike, you cannot see desire, attachment, you cannot see desire. Now, last time my desire is fulfilled, so that is what mind wants to repeat. I will get the same pleasure by eating the same food. Now, my desire is not fulfilled. It hesitated me. It has an element of fear, insecurity. How many times it happened? Every time. So, this confusion is the delusion. That is where I want to come. That desire fulfilled, I want to repeat it, delusion. That is settled in the intellect as a pleasure intellect. Desire not fulfilled, so the intellect says, go back, get more. You failed this time, you will succeed next time. Normally we succeed. We are fairly intelligent people, so we succeed. But problem is the pleasure intellect. Pleasure is not success and failure. Pleasure is not desire fulfilled or not fulfilled. So that pleasure intellect keeps the me world constantly running in our life. We continue to live in delusion. So after the delusion, Krishna says it is loss of memory, pride, and loss of intelligence. Now pick up the loss of intelligence. I don't know what I'm doing. I lost awareness. So the Nitya Karma will not happen. I am doing Nitya Karma, holding in the mind to know my real self. I like this food, yes, good. I'm eating this food for my real self. Remove the pleasure intellect. Tomorrow also I will eat, yes, I will eat for the sake of real self. So these subtler movements in the mind and the intellect should be cultivated while when the moment you wake up until you sleep. Whether you do, it's better to do the practice regularly, but even if you don't do the practice, it doesn't matter. I can give you hundreds of examples. Every master, internally, they do it. My master lived for 10, 15 years in a snow-cladded mountain, and he was walking too much. His knees used to swallow. So we returned. Everything happened. Now, sometime in the winter, when he used to wake up, his knees used to give him the lot of pain. Pain is real for the body. Pain is unreal for the real self. Look at it. Pain is definitely real for the body. We cannot deny it. But at the same time, that pain is unreal for the real self. So my master used to say, how faster your mind picks up the real self, settles in the real self, comes out from the real self, looks at the knees,
and take care. Nitya Karma. So, what is happening? You removed the suffering. Why suffering? Second disease. From attachment, the suffering comes. See that? Attachment to the body, suffering in the mind. Detachment to the body, no suffering in the mind. Used to give talk for 3 to 4 hours, and after 4 hours, when you are sitting in one posture, your knee is freezed. And at that age of 89, 87 years old. And such a heavy body. So I used to lift his body. And still he has a smile on your face. Oh, this is my horse. Let the horse walk a while. It will start running. So you see the pain for the knee or for the body, but pain is unreal for the real self. You have dropped the me world instantly. Now apply the same. You had a loss in the business. Before the mind enters into suffering, same principle. So that mind lives continuously at one level of calmness. That is known as sama. I am not going deeper. That actually is known as sama, dhamma, uparati. All those comes. We applied the uparati or we applied the titiksha. When I said pain is real for the body, very good. I cannot deny it. But pain is unreal for the real self. Mind, which way you move, are moving to the real self. You still experience the pain, but I'm not the body. So let me take care of it. For anything at the physical level, I made you clear. Lot of people have lot of doubts. A lot of people go for, oh, something will happen in my body, supernatural power will come. No, supernatural power will not come. But yes, you can do certain practices so that you can keep your body like a polar bear, like a frog. Yes, you do the practices of breathing for 3 hours every day, and after a year, you reach to a 2 breath per minute. Your basic metabolic rate will drop down, and you can tolerate even the freezing cold in the body. Not a big deal. But I'm more attached to the body now. It will not work. It has never worked. It has never worked.